Topic is Introduction to Python, Features and Application of Python Programming Language. So first we are going to start with the Introduction to Python. So Python is developed by Guido van Rossum. So Guido van Rossum इस लैंग्वेज के फाउंडर थे. उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया इन द ईयर 1989. सो पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इजीली पाइथन को लर्न कर सकते हो. सो पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, इसके पीछे एक फैक्ट है विच इज़ पाइथन इज़ नेम्ड आफ्टर द कॉमेडी टेलीविज़न शो मॉन्टीज पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. तो इसका नाम एक टेलीविज़न शो के नाम से रखा गया है. सो इट इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर द पाइथन स्नेक. तो इसका नाम एक्चुअली में स्नेक के नाम से नहीं रखा गया है. नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So as you see in the diagram, there are the multiple features of Python programming language which are readable, cross-platform, memory management, exception handling, open source, free, large standard library and easy to learn. So first feature is readable कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसको हम इजीली रीड कर सकते हैं. कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसका सिंटैक्स होता है. सो इट इज़ ईजी टू रीडेबल एंड लर्न लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ ईजी टू लर्न. सो लर्निंग पाइथन इज़ easy as this is expressive and high level programming language, which means it is easy to understand the language and easy to learn language. Next is cross platform. मतलब कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है. उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं लाइक मैक, विंडोज़, लाइनक्स. ठीक है, तो पाइथन इज़ अवेलेबल एंड कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम. So next feature is open source. Python is an open source programming language. Next is large standard library. Library means it contains built-in modules. ओके, सो आप सिंपली उन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. सो पाइथन कम्स विद अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट हैज़ सम हैंडी कोड्स. Handy means convenient or useful codes and functions which we can use while writing code in Python. Next is free. हमें Python को हम easily access कर सकते हैं, free of cost है, हम free of cost इसे डाउनलोड कर सकते हैं. So Python is free to download and use. So this means you can download it for free and use it in your application. So the next feature is support exception handling. So exception means anomaly. तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी एरर को जो हमारी प्रोग्राम में एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन उसको हम हैंडल कर सकते हैं. So if you are new, if you don't know about exception, so exception is just an event that can occur during program execution and that can disrupt the normal flow of program. So Python support exception handling, which means we can write less error sensitive codes and can test various scenarios that can cause an exception later on. तो हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग पहले ही टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ एडवांस्ड फीचर. जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें कुछ एडवांस्ड फीचर देती है लाइक जनरेटर्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस. सो नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. कि इसमें जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है और फ्री हो जाती है. सो पाइथन supports automatic memory management, which means the memory is cleared and free automatically, so you don't have to bother clearing the memory. So next, the applications of Python. So there are so many applications of Python. Here are some of them: web development, machine learning, data analysis, scripting, game development, embedded applications and desktop applications. So the first application is web development. So web framework like Django and Flask are based on Python. With the help of these software you can write server side code which helps you manage database, write backend programming logic and mapping, uniform resource locator, etc.
Next is machine learning. So there are many machine learning applications which are written in the Python. So machine learning is a way to write a logic so that a machine can learn and solve a particular problem on its own. मतलब कि मशीन में हमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटी देनी है कि वो ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ. सो फॉर एग्जांपल, products recommendations in websites like Amazon, Flipkart, etc. is a machine learning algorithm that recognizes users interest. हम अपने मोबाइल फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन है पाइथन की मशीन लर्निंग के लिए. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. Next is data analysis. So data analysis and data visualization in form of charts can also be developed using Python. Next is scripting. So scripting is very small programs to automate simple tasks such as sending automated response emails, etc. So such type of application can also be written in Python programming language. Next application of Python programming language is game development. हम Python को various types की games को develop करने के लिए use कर सकते हैं. So the next application is embedded applications. So you can develop embedded applications in Python. So the last application is desktop applications. So you can develop desktop application in Python using some library functions. So all this about the introduction to Python, features and application of Python programming language.